Hey guys, welcome to Learn Law. The topic we are going to cover today is Muslim law, the historical background of Muslim law. And guys, don't forget to hit the bell icon. So let's begin. The first slide is about keywords. Ayyam-e-Jahiliya, days of ignorance. Al-Furqan 1, showing truth from falsehood. Hijrat, the beginning of Muslim era. Sunnat, whatever Prophet said to do or did or allowed. Posthumous means born after father's death. So moving on to our next slide. This is the basic synopsis. These are the main topics which we are going to cover in the historical background video. The first one is introduction, about the historical background. So let's begin with the introduction part. Application of a law upon persons. लॉ में बी ईदर टेरिटोरियल और पर्सनल. जो एप्लीकेशन होता है मुस्लिम लॉ का या किसी भी लॉ का, वो या पर्सन पे होता है या पूरे टेरिटरी पे होता है. तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पर्सनल लॉ में और टेरिटोरियल लॉ में. टेरिटोरियल लॉ इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड इज एप्लीकेबल अपॉन पर्सन्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन दैट टेरिटरी. टेरिटोरियल लॉ पर्टिकुलर टेरिटरी पे अप्लाई होता है और वहाँ के पर्सन पे अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, पर अगर वो उस टेरिटरी में रह रहे हैं तो वो उन सब पे लागू होगा. पर्सनल लॉ इज अ सिविल लॉ अप्लाइड अपॉन द पर्सन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. पर्सनल लॉ पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अप्लाई होता है, ना कि पूरे टेरिटरी पे. वो पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स के लिए ही बना होता है पर्सनल लॉज. द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल लॉ इज मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ. And territorial laws examples are IPC, CRPC contract. These things like IPC, CRPC contract, they are territorial laws. और ये जो है वो टेरिटरी, पूरे टेरिटरी पे अप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं होता है. लेकिन पर्सनल लॉ जो है वो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, पर्सन्स, उन पे अप्लाई होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अप्लाई होता है. टेरिटोरियल लॉ इज डिफरेंट, इट्स फॉर एवरीवन, बट पर्सनल लॉ इज फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. On to our next slide. Quran, the foundation of Muslim law. Muslim law is derived from Quran. Quran is the holy book of Muslims, directly from God to Prophet by Gabriel. In Urdu or Arabic it's said Jibreel. Words of God transferred to man through Prophet. Words were sent by God from time to time as it was necessary. Where the Quran is silent, we use Sunnat or Hadith. Hadith is next to Quran. अब इसको सिंपल वे में देख लेते हैं. मुस्लिम लॉ बेसिकली कुरान से लिया गया है, कुरान से बहुत सारे पार्ट्स लिए गए हैं, कुरान से डिराइव किया गया है मुस्लिम लॉ को. और कुरान जो था वो गॉड, अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट के पास भेजा गया था बाय अ मैसेंजर नेम्ड जिब्रील. एंड द वर्ड्स वे ट्रांसफर्ड, मतलब वर्ड्स को ट्रांसफ़र किया गया था प्रॉफिट तक टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे नेसेसरी था उस हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता था. और जो वर्ड्स ऑफ गॉड थे जो कि अल्लाह ने ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट को, वो प्रॉफिट ने मैन को पास ऑन किया, मैन को बताया, मतलब लोगों को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस मिले हैं गॉड की तरफ से या अल्लाह की तरफ से. और जहाँ जहाँ कुरान साइलेंट है, जहाँ जहाँ कुरान में कुछ मेंशन नहीं है, वहाँ पे हदीत या सुन्ना को प्रेफर किया जाता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. प्री इस्लामिक अरेबिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अय्याम-ए-जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस. बिफोर मोहम्मद बिकेम अ प्रॉफिट, each tribe was governed by own laws and conducts of Arabs were regulated. Debts, which is called usury, polygamy, gambling, no legal rights for women, divorce was easy, women condition was not good, female infanticide, drinking was legal. Such was the condition of Arabian society, in which reforms were introduced by Islam to bring about a complete transformation of the society. अब इसको easy way में समझ लेते हैं. इस्लाम आने के पहले, प्रॉफिट बनने से पहले हर ट्राइब अपने अपने लॉज के हिसाब से और अरब्स के कंडक्ट्स के हिसाब से गवर्न किया जाता था. और इस्लाम के आने से पहले डेब्ट्स बहुत ज़्यादा थे, पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा होती थी,
गैम्बलिंग भी होता था, लीगल राइट्स नहीं थे विमेंस के लिए, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, डिवोर्स बहुत इजी था, विमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा था और ड्रिंकिंग बहुत आम था, लीगल था। तो ये जो कंडीशन था वो अरेबियन सोसाइटी में इस्लाम के आने के पहले था, और इस्लाम के आने के बाद सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया था। So moving on to our next slide, which is history of Islam. First we will look at the Prophet and the advent of Islam. Prophet was born at Makkah in 571 AD. The Prophet was a posthumous child born after father's death. After the age of 25, he spent most of the time in solitude in a cave named Hira. In Arabic, it's also said Ghar Hira. His abode where he used to pray and meditate. He became prophet at the age of 40 when he received his first wahi or message from God. Flight from Mecca, which is also known as Hijrat, the flight of Prophet from Mecca to Medina among his followers was known as Hijrat. Hijrat marks the beginning of Muslim era. तो इसमें सिंपली बस इतना बताया गया है कि प्रॉफिट जो है वो मक्का में पैदा हुए थे. He was born in Mecca in 571 AD. वो एक पॉस्टमस चाइल्ड थे जिनकी बर्थ जो है वो फादर के डेथ के बाद हुई थी, और मतलब 25 years ऑफ एज तक वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना एक गुफा में स्पेंड करते थे. वो वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे प्रे करते थे और वहाँ बैठ रहते थे. और एट द एज ऑफ 40 उनको मैसेज मिला, वही आई, और जो कि गॉड की तरफ से थी, अल्लाह की तरफ से थी, और उनको ये पता चला था कि वो प्रॉफिट हैं एट द एज ऑफ 40. फिर क्या हुआ, वो मक्का से मदीना आए, तो उस प्रोसेस, वो जो मक्का से मदीना है उस प्रोसेस को हिजरत कहा जाता है. और जब वो मदीना अपने फॉलोअर्स के पास आए तो वो जो टाइम था वो बिगिनिंग था मुस्लिम एरा का. उस टाइम से मुस्लिम एरा शुरू हो गया था. सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ इस्लाम and its significance. Islam means peace, greeting, safety and salvation. Islam means submitting to the will of God. In secular sense, Islam means establishment of peace. And this term, establishment of peace, it occurs in Quran 8 times. Islam is comprehensive one and does not express any association with any particular person, people or country. Object of this religion is submission to Allah. Those who follow this path are Muslims. इसमें सिंपली ये बताया कि इस्लाम क्या है. इस्लाम मीन्स पीस और ग्रीटिंग्स, सेफ्टी, सैल्वेशन, खुद को अल्लाह की राह पे चलाना, सबमिटिंग टू द विल ऑफ अल्लाह. और ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ नहीं है इस्लाम. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, कंट्री या पीपल पे नहीं है, या किसी एसोसिएशन पे नहीं है. और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है सबमिशन टू अल्लाह, और जो भी इन चीज़ों को फॉलो करता है उसको मुस्लिम कहा जाता है. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम इज़ वन वास्ट ब्रदरहुड एंड ऑल men are equal in Islam. It is said that this religion became corrupt from time to time and the people forgot the fundamental principles of the true faith, and so God sent Adam अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम, अब्राहम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम and Jesus, whom the Muslims call as Isa, as these were the Rasuls in order to show the people's right path and warn them against the evil deeds. Muhammad was also a Rasul, prophet. Muhammad told his peoples that excellence consisted only in deed. Islam, above all, is religion of works. All creation is the family of God. And of all creation, the most beloved of God is he who does most good to his family. God will not be merciful to him who is not merciful to men. अगर इसको सिंपल वे में समझें तो मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है कि इस्लाम एक ब्रदरहुड, वास्ट ब्रदरहुड है, जिसमें हर इंसान इस्लाम में इक्वल है, हर एक इंसान इक्वल है,
और ये भी कहा जाता है कि ये रिलीजन कुछ टाइम के लिए करप्ट हो गया था, अपने सही रास्ते से हट गया था और अपने ट्रू फेथ को भूल गया था, अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भूल गए थे लोग। तो इस वजह से गॉड अल्लाह ने ये प्रॉफिट्स को भेजा, रसूल्स को भेजा, ताकि लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके और इविल डीड्स के बारे में बताया जा सके। और जो प्रॉफिट है, रसूल है मोहम्मद, वो लोगों को ये बोलते थे कि जो इंसान की एक्सीलेंस है वो उसके गुड डीड्स, सिर्फ और सिर्फ उसके डीड्स में कंसिस्ट है। और कुछ कोट्स हैं जो कि कुरान से लिए गए, उसमें ये कहा गया है कि इस्लाम अबव ऑल इज़ अ रिलीजन ऑफ वर्क्स, ऑल क्रिएशन इज़ द फैमिली ऑफ गॉड एंड of all creation the most beloved of God is he who does most good to his family। सबसे बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड की ये माना जाता है कि वो लोग हैं जो बेस्ट हैं, जो बेस्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और गॉड कभी उस इंसान के साथ मर्सीफुल नहीं होगा जो दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मर्सीफुल नहीं होता है। ये मेन टीचिंग्स थे इस्लाम के। सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ after disappearing of Prophet Muhammad from this world. We can also call it after death of Prophet Muhammad. After death of Prophet Muhammad in 632 AD, the period of Caliphate began, Khilafat period. The Sunnah or Hadith were preserved by authorized persons. The Quran and Hadith were cited by surviving companions of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad के डेथ के बाद खिलाफत पीरियड शुरू हुआ था और जो सुन्नत और हदीस थे वो ऑथराइज पर्सन्स के द्वारा प्रिजर्व कर दिए गए थे और जो प्रॉफिट के कंपेनियंस थे वो लोग मिलकर कुरान और हदीस को कंपाइल किए थे। मूविंग ऑन टू अ लास्ट स्लाइड विच इज़ सक्सेशन टू कैलिफेट। द प्रॉफिट हैड नो सन्स। प्रॉफिट मोहम्मद के कोई सन नहीं थे जो खिलाफत में फर्स्ट हो सकते थे। और जो कैलिस बने, खलीफास बने, सबसे पहले थे अबू बकर 632 AD, फिर आए थे उमर 634 AD, देन केम उस्मान इन 644 AD, और फिर आए थे अली हु वाज आल्सो सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड आफ्टर अली केम हसन हु वाज सन ऑफ अली, एंड आफ्टर दिस कैलिफेट पीरियड एंडेड देन केम the Umayyad dynasty who ruled Damascus from 661 AD to 750 AD. फिर आए Abbasid dynasty, then came the Ottoman dynasty till 1924, और फिर British period and afterwards in India. After this Ottoman dynasty came the Britishers. So that's all. Thank you for watching. Please like, share and do comment below, and follow us on Instagram and also subscribe us on YouTube.